सब डिवोटीज अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। Rule 1, follow. They don't teach that so much anymore. That used to be the first thing you had to learn. Don't even try. Jayadvaita. This is so loud. This is like for, a stadium. Hare Krishna, Hare Krishna. Just has to be so that you can hear it. It doesn't have to be for a stadium. Now it's probably too long. Now is it good? Now it's good, right? Good? Yes. Okay. Go ahead. You're a little ahead. Jayadvaita Madhava
Vaishnavad Paramhansa Paripradakacharya Stotra Shri Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaja Prabhupada Ki Jai, ISKCON Samsthapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopinath Sham Kun Radha Kunigiri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Tham Ki Jai, Pradeep Tham Ki Jai, Jagannath Puri Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamana Mai Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande. How's your volume? How is your volume? Test call. Hare Krishna, Hare Krishna, ठीक है. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 7.1.21. Etad Pramyati Me Buddhir Departir Eva Vayuna Bruhi Etad Adbhutatamam Bhagavan Ki Atra Karanam Etad Pramyati Me Buddhir Departir Ivuvayuna Brujetad Adbhutatamam Bhagavan Yatra Karanam Etad Pramyati Me Buddhir Departir Ivavayuna Brujetad Adbhutatamam Bhagavan Yatra Karanam. Etad Brahmati me buddhi Etad Pramyati Me Buddhir Departir eva vayuna Departir Ivavayuna Viketa adbhutatam Brujetad Adbhutatamam Bhagwan hi atra karanam Bhagavan Yatra Karanam. Etad Pramyati Me Buddhir Departir Ivavayuna Brujetad Adbhutatamam Bhagavan Yatra Karanam. Etad Pramyati Me Buddhir Departir Ivavayuna Brujetad Adbhutatamam Bhagavan Yatra Karanam. Ladies? Etad Pramyati Me Buddhir
Viparchirni Vayunam शब्दार्थ इसे लेकर भ्राम्यति डगमगा रही है मैं मेरी बुद्धि विपर्चि दीपक की लो इवा सदृश वायुना वायु से ब्रूहि कृपा करके कहे एतत् यह अद्भुततमम् सर्वाधिक अद्भुत भगवान समस्त ज्ञान से युक्त ही निश्चय ही अत्र यहाँ कारण This matter is undoubtedly very wonderful. Indeed, my intelligence has become disturbed, just as the flame of the candle is disturbed by a blowing wind. O Narad Muni, you know everything. Kindly let me know the cause of this wonderful event. अनुवाद यह विषय निस्संदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताइए। Tatparya. The Shastras enjoin Tadvigyanartam sa gurumeva bigachet. When one is perplexed by the difficult problems of life, to solve them one must approach a guru, like Narad or his representative in the disciplic succession. Maharaja Yudhisthira therefore requested Narad to explain the cause for such a wonderful event. तात्पर्य शास्त्र का आदेश है तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। जब मनुष्य जीवन की कठिन समस्याओं से टकरा जाए तो उसको हल करने के लिए उसे नारद अथवा परंपरागत किसी प्रतिनिधि तुल्य गुरु के पास जाना चाहिए। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने नारद से विनती की कि वे ऐसी अद्भुत घटनाओं का कारण बतलाए। Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Tadhati Shapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Stam Sujivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kamshana Gaudangi Radhe Vrindavaneshri Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hori Priye Vansha Golpatarubhyascha Kripa Sindho Bhyevacha Patita Nam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shiva Shadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Etad Brahmyati me buddhir, departure vivayuna, bruhyetad adbhutatamam, Bhagavan yatra karan. Etad means this mysterious and wonderful event that everyone had seen the Shishupal spirit, Atma, merge into the body of the Lord. यहाँ पर एतत् का अर्थ है कि सबने देखा कि शिशुपाल का जो आत्मा है वो भगवान के शरीर में विलीन हो गया, तो ऐसी अद्भुत घटना है उसका वर्णन किया जा रहा है. How is it possible that such a blasphemer, offender to the Lord, could attain this liberation? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा बड़ा अपराधी या ऑफेंडर जो था वो मुक्ति को प्राप्त कर सका? Etad Brahmyati me buddhir. This bewilders my intelligence. तो इससे मेरी जो बुद्धि है वो चकरा रही है. The intelligence can only go so far. और जहाँ तक मेरी बुद्धि का प्रश्न है, The intelligence can only go so far, yeah? हाँ, बुद्धि है वहाँ तक ही पहुँच सकती है. That, what is that? In Brahma Samhita it's said that even if one could travel at the speed of the mind or the wind for thousands of years, one could not reach the tip of the toe of Govinda. तो जैसे ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि कोई है मन या वायु की गति से भी यात्रा करे तो भी है भगवान के चरण कमलों तक नहीं पहुंच सकता. Buddhi, intelligence, is one of the material elements, so it's limited. क्योंकि बुद्धि एक भौतिक तत्व है तो उसकी मर्यादा है. And therefore subject to confusion. और इसीलिए उसमें द्विधा उत्पन्न होती है. Confusion, mistakes, bewilderment. तो द्विधा उत्पन्न होती है, त्रुटियां होती है, भूल करते हैं. Pocket cameras in the pocket, please. So, departure iva vayuna. The Yudhishthira Maharaj says that this has bewildered my intelligence, the way that that the wind shakes a flame. तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे वायु है तो दिए को विचलित करता है, तो उसी प्रकार से मेरी बुद्धि भी विचलित हो रही है. For yoga practice, yata deepo nivatasto nengate sopamasmita yogino yata chittasya yunjato yoga matmana. The yogi has to practice making his mind as still as a lamp in a place where there's no wind. तो जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि योगी को अपने मन को जैसे जहाँ पर वायु दिया को विचलित नहीं करता, उसी प्रकार से मन को स्थिर करना होता है. But Yudhishthira Maharaj says, my mind is as bewildered as a lamp in the middle of the wind. तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर तो मेरा मन है वो है वायु से जैसे दिया विचलित होता है उसी प्रकार से भ्रमित हो रहा है. Adbhutatamam, this is most wonderful. और ये बहुत अद्भुत है. Astonishing. Unnatural. Adbhuta also means unnatural. आश्चर्यकारक है, अप्राकृतिक भी है. Contrary to expectations. और जो अपेक्षा उससे विपरीत है.
So you please explain it. और इसलिए आप मुझे बताइए What was the cause? How is it possible? तो आप मुझे इसके पीछे का कारण बताइए और ये किस प्रकार से हुआ। You can explain this because you are Bhagavan. आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि आप भगवान हैं। Bhagavan here means a empowered servant of the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पर भगवान शब्द का अर्थ है कि जो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त है ऐसा सेवक। Not that every guru is Bhagavan, the personality of Godhead. तो No. यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है कि हर गुरु है वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। That's rubbish. तो ऐसा विचार है वो बेकार है। Even Narad Muni himself had experience. The phones are distracting, whatever it is. They're distracting, even if it's something spiritual. They're distracting. I was making notes. I was making notes, but actually. Oh, I see. Well, all right. It distracts me, but it's okay. Now that the explanation is there, go ahead. One never knows what these phones are doing. So the spiritual master is the representative of Bhagavan, not that he's Bhagavan. तो आध्यात्मिक गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि है, नहीं कि वो भगवान है। The Kintu Prabhuya Priya Evatasya Sakshat Haritena Samasta Shastre Muktastata Bhavyate Evashadri. All of the saintly persons, all of the Shastras confirm that the spiritual master is directly the personality of Godhead. तो सभी साधु भी बताते हैं, सभी शास्त्री भी बताते हैं कि आध्यात्मिक गुरु है वो भगवान के साक्षात प्रतिनिधि है। Kintu, but मतलब भगवान जैसे है परंतु not that he's the Purna Purushottam Bhagavan, but Kintu Prabhuya Priya Evatasya, because he's very dear to the personality of Godhead. तो यहाँ पर किंतु शब्द है बताता है कि वो भगवान की तरह ही है, परंतु फिर भी वो भगवान के दास हैं, उनको प्रिय है। Priya. Kintu Prabhuya Priya Evatasya. Vande Guru Shri Charanaravinda. Oh, if one wants to understand the personality of Godhead, or if one wants to understand the meaning of life, then tad vijnanartam sa gurumeva abhigaj chet. One must approach a bona fide spiritual master. तो जीवन के अर्थों को समझने के लिए, इस विज्ञान को जानने के लिए व्यक्ति को है हमारे आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। Abhigaj chet. Gaj chet means one must. It's not optional. तो यहाँ पर गच्छित है, अभिगच्छित का अर्थ है कि उसको जाना ही चाहिए, कोई विकल्प नहीं है। Tad vijnanartam. If one wants to get actual understanding, तो व्यक्ति अगर वास्तव में समझना चाहता है तो anyone can read books कोई भी पुस्तक तो पढ़ सकता है and get divya gyan. और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। But vigyan, to actually understand and be able to apply that book, to get realization, for that one must approach the bona fide spiritual master. परंतु वो पुस्तक में जो विज्ञान है उसको समझने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए उसको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा। One must. जाना ही होगा उसको। Tad vijnanartam sa gurumeva abhigajche. Samat pani shrotriyam brahmanishtam. Then who is the pramanic guru? Shrotriyam brahmanishtam. तो प्रमाणित गुरु कौन है? उसके दो लक्षण हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। Shrotriya means he has to have heard in the Guru Parampara. श्रोत्रिय का मतलब है कि जिन्होंने गुरु परंपरा में सुना हुआ है, श्रवण किया हुआ है। Shrotriya. He must be conversant with the siddhantas, the conclusive understandings of Shastra.
और उन्होंने सिद्धांत को समझा होना चाहे, जो सिद्धांत का जो सार है वो अच्छी तरह से उन्होंने समझा होना चाहिए। Shrotriya. And Brahmanishta, he should have full faith in the Supreme Personality of Godhead. और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है कि उसको भगवान में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। Tad vijnanartam saguru. Elsewhere, tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreya uttamam. If one is serious about the ultimate purpose of life, then one should approach the spiritual master. तो अन्य जगह पर भी बताया गया है कि कोई अगर अपने जीवन के हेतु को समझने के लिए गंभीर है तो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। Gurum prapadyeta, because one has to surrender to the spiritual master. प्रपद्यते का यह अर्थ है कि व्यक्ति को है गुरु की शरणागति लेनी होगी। It's not just like an ornament, the way a lady goes out and buys a handbag as an accessory. तो ये ऐसा नहीं कि आप है बाजार में गए और एक थैला खरीद कर ले आए। You get a Gucci handbag and everybody sees, oh, she has a Gucci handbag. कोई ऐसा कह सकता है कि काफी अच्छा थैला आप लेकर आ गए। Oh, it's not like that I also have to have a first-class guru, very respected guru, because I have money, I have a nice wife, I have a good home, I have a good job, but I don't have a guru. So I have to get a guru to complete the profile. तो कोई कह सकता है कि मेरी प्रोफाइल के लिए मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी पत्नी, अच्छी कार है, सब कुछ है, तो साथ में गुरु भी होना चाहिए तो मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। No. One has to surrender to the guru. तो इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए, परंतु व्यक्ति को गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। Just as one has to surrender to the personality of Godhead. जिस प्रकार से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी होती है। One can't dictate to the personality of Godhead, do this, do that. तो व्यक्ति है भगवान को कोई निर्देश आदेश नहीं दे सकता कि आप ये कीजिए वो कीजिए। Mamekam sharanam braja. One has to take shelter of the personality of Godhead. One has to surrender to the personality of God. तो व्यक्ति को है भगवान की शरणागति लेनी होती है, उनके आदेश का पालन करना होता है। So the bona fide spiritual master is the representative of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, one has to surrender to him. और क्योंकि आध्यात्मिक गुरु भी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके प्रतिनिधि है, तो उनकी भी शरणागति व्यक्ति को लेनी होगी। Tadvidhi pranipatena. Same thing. One has to surrender. तो यहाँ पर भी बताया तद्विधि प्रणिपातेन कि शरणागति लेनी होगी। That means Guru Mukha Padma Bhakya Chatete Kuriyaikya Arna Kuriya Manayasha. What you do, what you say, I'll do. तो शरणागति का यह अर्थ है कि जो भी वो बताएंगे, जो भी कहेंगे, उसको हम करेंगे। I'll make that my life and soul. और वो मेरे जीवन का मैं लक्ष्य बनाऊंगा, प्राण बनाऊंगा। No gambling, no intoxicants, no meat eating, no illicit sex. तो जैसे 4 नियम बताए हैं कि कोई मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, नशा नहीं करना है और जुआ नहीं खेलना है। 16 rounds Hare Krishna. और 16 माला हरे कृष्ण मंत्र की जप करना है। And that's the beginning only. और ये शुरुआत है। Initiation means beginning. दीक्षा का मतलब है कि शुरुआत करना। Not I follow these rules, I chant 16 rounds, business finished. तो मैं अभी नियमों का पालन कर रहा हूँ, 16 माला जप कर रहा हूँ और अभी मेरा कार्य पूरा हो गया। But surrendered. परंतु शरणागति, Whatever the spiritual master asks, I'm ready to do. तो जो भी आध्यात्मिक गुरु मुझे कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। If one is not ready to surrender, one should not make a show of initiation. और अगर वह व्यक्ति शरणागति के लिए तैयार नहीं है तो उसको दीक्षा का नाटक नहीं करना चाहिए। Then it's meaningless. Then it's meaningless. हाँ, तो वो अर्थहीन होगा। One has to surrender. व्यक्ति को शरणागति लेनी होगी। Tasmad gurum prapadyeta jigyasu. And why? Jigyasu shreya uttama. If one seriously wants to understand the ultimate purpose of life. तो व्यक्ति वास्तव में गंभीरता से जीवन के उद्देश्य को समझना चाहता है। The guru
is not to be approached to solve petty problems. तो गुरु के पास है छोटे छोटे सामान्य समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं जाना चाहिए। My son should succeed in his exams. My wife's health should improve. Please give me your ashirvad. This is useless. तो मेरे बेटे को परीक्षा में पास होना है, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो ये सब बातें हैं वो अर्थहीन है। The guru is not meant just as a blessing machine, ashirvad dispenser. तो गुरु है आशीर्वाद देने का एक मशीन, यंत्र नहीं है। One approaches a guru to actually understand the purpose of life and how to achieve that purpose. तो व्यक्ति गुरु को शरणागत होता है कि जीवन के अर्थ को जानना और उसको पाने के लिए मार्गदर्शन देना। Sadhya and sadhana, the goal and the means to achieve that goal. तो साध्य और साधन है, लक्ष्य और उसको पाने का जो तरीका है उसको जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। Tasmad gurum prapadyeta jigyasu shreyavutam. There are two words, praya and shreya. Praya means immediate advantage, benefit, and shreya means ultimate objective, ultimate benefit. तो दो शब्द है प्रिय और श्रेय। प्रिय का अर्थ है कि तुरंत जिसमें लाभ होता है, और श्रेयस का अर्थ है कि जिसमें लंबे समय में लाभ होता है और वास्तव में जो लाभ हमें होता है। So one should approach the spiritual master for shreya uttamam, the ultimate benefit. तो व्यक्ति को गुरु के पास श्रेयस के लिए, सर्वोत्तम लाभ के लिए जाना चाहिए। And what are the qualifications of the pramanic guru? प्रमाणित गुरु जो है उसकी क्या-क्या योग्यताएं होती है? Same thing. Shabde parecha nishnatam pramani samupamashraya. That he's Shabde parecha nishnatam. He's conversant with the transcendental message. तो यहाँ पर प्रयोग शब्द है कि शब्दे परिचय निष्णातम, कि वो दिव्य जो संदेश है उसमें अभिज्ञ होना चाहिए। Brahmani samupamashraya, and he's taken shelter of the personality of Godhead. और उन्होंने भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति ले होनी चाहिए। This is the teaching of all the shastras. और यही सब शास्त्रों का सार है। In recent times, people have concocted a perverted notion that one surrenders to the previous acharya, and in this way one becomes perfectly situated. तो आजकल ये बात चल रही है कि व्यक्ति को गुरु को नहीं परंतु कोई पहले जो आचार्य हो गए पूर्व में तो उनकी शरणागति लेनी चाहिए। This is a pakka invention. तो ये एक प्रकार का लोगों का अपना मन की बात बनाई हुई है। Mental concoction. और ये मानसिक तर्क है। Here we see that Yudhishthira directly approaches Narad Muni. I have a question. What's the answer? तो यहाँ पर है हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज सीधा भगवान कृष्ण के पास जाकर प्रश्न करते हैं, मुझे प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है? Narad Muni has his Guru Maharaj, Lord Brahma, but we don't see that Yudhishthira Maharaj fixes his mind on Lord Brahma and meditates what is the answer to this question. तो यहाँ हम नहीं देखते कि नारद मुनि के जो गुरु है ब्रह्मा जी तो युधिष्ठिर महाराज है या ध्यान करते हैं और विचार करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। He doesn't ask himself, what would Lord Brahma say? और वो अपने आप को नहीं पूछते कि ब्रह्मा जी इसके बारे में क्या कहेंगे। He surrenders to Narad Muni, who's right there before him, and asks, Sir, you please explain. तो उनके सामने प्रत्यक्ष जो नारद मुनि है उनकी सेवा करके उनको ही प्रश्न करते हैं कि आप मुझे प्रश्न का उत्तर दीजिए। If you don't find anyone in whom you have confidence, don't surrender. और अगर आपको लगता है कि आपको किसी में विश्वास नहीं है तो शरणागति मत लीजिए। Wait. और आप इंतजार कीजिए। But you can't make a concoction. I'll surrender to the previous, most reliable, most exalted authority. तो ऐसा तर्क मत दीजिए कि मैं बोलो कि कोई आचार्य हो गया है जो सबसे प्रमाणित हो गए उनको शरणागति करूंगा। If that were the process, we wouldn't need a spiritual master at all. We just surrender to Bhagavan, the personality of Godhead. Sir, please accept me.
तो उसके लिए तो आपको कोई पूर्व के आचार्य उनकी शरणागति लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा भगवान की शरणागति ले सकते हैं। Or any other concoction. One concoction is as good as another. और आपके मन में जो भी तर्क आता है या विचार आता है उनकी शरणागति आप ले सकते हैं। Evam parampara praptam imam rajarshio vidi. One has to accept the process of guru parampara. तो हमें जो गुरु परंपरा की प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। And become servant of the servant of the servant of the और servant. हमें दासों का दास बनना होगा। And the more times one adds servant, the better one's position. तो ज्यादा वो दास के दास का दास होगा उतना वो बेहतर है। All right. Hare Krishna. Are there any questions? Koi prashna hai? Yes. Question is you said that one should take orders from spiritual master. So generally for all the devotee, spiritual master is not giving like personally following somebody, some person devotee and giving orders. So generally devotee side they think that there is no any specific order for me. So he is also not that much committed for general instruction given like during classes and other things of a spiritual master, because he thinks that there is no personal instruction for me. So like devotees think in that way that I have no specific instruction. So You never got any instruction? no, like in a personally, like saying one to one. How would Yes, that is there. But other than that, so devotee thinks so that is sufficient, like for regular principle and chanting 16 hours. And that's also an instruction? Yes. But if you think you haven't gotten enough instruction, then ask the spiritual master. Prabhupada asked, he said that's the only question he asked his spiritual master. Anubhav? हाँ, प्रश्न मेरा ये था कि शिष्य है विचार करता है कि जैसे प्रभुपाद जी को या अन्य आचार्यों ने को तो कभी कभी उनके गुरु ने व्यक्तिगत रूप से बुलाकर कोई उनको निर्देश दिए, पर मेरे गुरु ने तो है मुझे ऐसे कोई निर्देश दिए नहीं है। 16 माला और 4 नियम पालन करना ये निर्देश दिए हैं, और बाकी सब बातें तो प्रवचन में हम सुनते हैं। तो कभी कभी वो उन बातों को या उनके पुस्तक में या प्रवचन में उन बातों को मुझे भी इंस्ट्रक्शन है उस प्रकार से नहीं लेता है। तो शिष्य है वो कभी कभी इसीलिए उनके निर्देशों का सब जो निर्देश है उनका पालन करने के लिए इतना तैयार नहीं होता है। तो महाराज इस प्रश्न का जवाब दिए हैं कि इसीलिए गुरु शिष्य है उनको गुरु के पास जाकर पूछना भी चाहिए, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन है व्यक्तिगत रूप से दी गई है या फिर उनके प्रवचन या किताबों के माध्यम से, और व्यक्तिगत रूप से भी जाकर वो पूछ सकता है कि मेरे लिए क्या निर्देश है, आदेश है। Srila Prabhupada, you left that. Srila तो Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी की जैसे घटना है कि वो बताते हैं कि मैंने अपने गुरु महाराज को जाकर ये प्रश्न किया था कि मेरे लिए क्या निर्देश है, तो यही एक मुख्य मतलब मैंने प्रश्न किया उनसे। The only question that he asked. तो यही एक प्रश्न प्रभुपाद कहे कि सब शिष्यों को गुरु को करना चाहिए। How can I serve you? कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। Then he got the instruction. You try to spread this, what you heard from me, in English. तो तब उनको निर्देश मिला कि आपने जो भी शिक्षाएं ली है तो उसको अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए। That's all. A few words, and this whole movement has appeared. तो कुछ शब्द ही पर्याप्त है और एक पूरा एक आंदोलन शुरू हो गया। Guru Mukha Padma Bhakya Chate Kuriyaikya Arna Kuriya Manayasha. Generally, the spiritual master is not everywhere. He's not present in every corner of the universe. So he has his system, he has his people. So one takes instruction from the senior devotees, from those who are representing the spiritual master. तो जैसे कि गुरु आध्यात्मिक गुरु है, हर जगह पर दुनिया के हर कोने में वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस समय है शिष्यों को गुरु के जो प्रतिनिधि शिष्य है, वरिष्ठ शिष्य है, तो उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। Otherwise, if that's not enough, ask.
और अगर आपको लग रहा है कि वो भी पर्याप्त नहीं तो आप है गुरु को सीधा जाकर भी पूछ सकते हैं। Maharaja, but as we are speaking about relationship between guru and disciple, let me ask you a question that is not clear for me. As I heard that how it was in the tradition and what we are doing now, please remove my doubts from the superstitious gossips that I heard from devotees. I heard that no one can be guru in presence of his spiritual master. No, some devotees preaching that no one can accept disciples in presence of his guru. Is it mentioned somewhere in Shastra? Anuvad. ओके, तो प्रश्न है प्रभु जी का कि उनकी ऐसी समझ है या उन्होंने ऐसा सुना है कि जब तक गुरु है तब तक उनका शिष्य है गुरु नहीं बन सकता, तो इनका प्रश्न है कि ऐसा ठीक है कि नहीं? That's the etiquette. तो महाराज का उत्तर है कि एक शिष्टाचार है That in the presence of the spiritual master, one should not be so audacious as to accept disciples on his own. तो जब तक गुरु उपलब्ध होते हैं तब शिष्य है वो इतने मतलब ऑडेशियस हिम्मत करेगा या अपने आप को गुरु के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। One should bring the prospective disciple to the spiritual master. तो सामान्य रूप से वो है कोई भी शिष्य बनना चाहता है तो वो अपने गुरु के पास उनको लेकर आएगा। Otherwise, it's maryada vyatikrama, overstepping the authority. और अगर वो ऐसा करता है कि उनको स्वयं वो दीक्षा दे देता है तो वो मर्यादा का व्यतिक्रम होगा। Why should I bring him to my guru? I can be guru. मैं इन लोगों को क्यों मैं गुरु के पास ले जाऊँ, मैं ही गुरु बनकर उनको दीक्षा देता हूँ। Then he becomes an offender. तो ऐसा अगर वो विचार करता है तो वो अपराधी होगा। But the spiritual master can request the disciple to initiate. पर आध्यात्मिक गुरु है वो शिष्य को ऐसा आदेश दे सकते हैं कि वो दीक्षा प्रदान करे। In Srila Bhaktivinoda Thakur's Jayadvaita, we find there's a passage in which the spiritual master takes the disciple to meet his own guru. तो जय धर्म है उसके भक्तिविनोद ठाकुर एक मतलब कथा में बताते हैं कि जो है शिष्य है वो जो एक नया भक्त आता है उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के पास लेकर जाता है। That means the guru was there and his guru was also there. तो वहाँ पर गुरु भी है और उनके भी गुरु है। And there are some examples in our sampradaya also. और हमारे संप्रदाय में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। So it's not the usual, तो ये हर बार या सामान्य घटनाएं नहीं है, but it's accepted. परंतु ये होता है और उसको मतलब स्वीकृत है। It's, yes. At the same time, also some devotees tell that after Guru's departure, that all his disciples can be automatically Guru, can give initiation. तो प्रभु जी का और एक प्रश्न है कि गुरु जब चले जाते हैं तो उनके सब शिष्य गुरु बनने के योग्य हो जाते हैं और दीक्षा दे सकते हैं, तो ये ठीक है कि नहीं? Yes. But we are seeing that in our organization, only few of Prabhupada disciples now playing role of initiating Guru, whereas others don't. That's an organizational matter. तो हम देखते हैं कि इस बार में तो है प्रभुपाद के जाने के बाद उनके कुछ शिष्य हैं जो गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो महाराज का उत्तर है कि ये जो संस्था है तो उसका एक व्यवस्था होती है जिसमें इस प्रकार से होता है। In principle, after the departure of the spiritual master, the disciple should continue and continue the parampara. तो सिद्धांत तो यह है कि गुरु के जाने के बाद है शिष्य को गुरु परंपरा है वो चालू रखनी चाहिए और वो दीक्षा प्रदान कर सकता है। But then the organization has its considerations. परंतु जो संस्था है उसमें उनकी भी कुछ विचार और व्यवस्था होती है, Whatever they might be. वो जो भी है। Generally, they're concerned that unqualified people or तो उनका एक inexperienced or unqualified or devious people
should not make a mess. तो उनका एक मुख्य जो चिंता होता है कि जो अयोग्य है और जो अभी इतने पक्के नहीं हुए हैं वो अगर गुरु बन जाएंगे तो पूरा है तंत्र बिगड़ जाएगा और उससे खराब छाप पड़ेगी. Whether their resolutions or provisions or system is wise or effective or the best is another question. परंतु ये फिर व्यवस्था है वो अच्छी है कि नहीं है कि क्यों है वो अलग प्रश्न है. But that's their idea that as the managing authority, they have to manage everything, so they have to manage that also. तो क्योंकि संस्था है उसके जो व्यवस्था मंडल है मैनेजमेंट है उनको ये सब कुछ मैनेज करना है और साथ में ये वस्तु भी उनको देखनी होगी. And also I heard that traditionally sannyasi is supposed not to give initiation, it's only for guru or some householder, yeah. And nowadays we see this in our organization is more sannyas culture. That we don't see much householders playing the role of Diksha Guru. Or it's just superstition, it's not from tradition that sannyasi should not. तो प्रभु जी का और एक प्रश्न है कि परंपरा में ऐसा देखा गया है कि सन्यासी तो दीक्षा नहीं देते थे, अधिकतर जो गुरु होते थे वो गृहस्थ होते थे. तो वर्तमान में हम देखते हैं कि सन्यासी गुरुओं का ज्यादा प्रचलन है, गृहस्थ गुरु इस में बहुत कम है. It's not that only grihasthas can initiate. It's not that only grihasthas should initiate. और ये भी नहीं है कि सिर्फ गृहस्थ ही दीक्षा देंगे. Prabhupada was a sannyasi, he gave initiation. तो भी स्वयं सन्यासी थे और उन्होंने दीक्षा प्रदान किया. His Guru Maharaj. और उनके गुरु महाराज भी सन्यासी थे. And many in the parampara. और परंपरा में और भी सन्यासी हुए कि जिन्होंने दीक्षा दी. So whether there's, but grihasthik also can initiate. और गृहस्थ भी दीक्षा प्रदान कर सकते हैं. Actually, it doesn't matter. तो ये मुख्य बात नहीं है. Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kene Noi Jai Krishna Tattvaita She Guru Hai. Sri Chaitanya Mahaprabhu said it doesn't matter Brahmacharya, Grihastha, Sannyasi, Vanaprastha, Kiba Vipra Kiba Nyasi. He may be Brahmin, he may be a sannyasi, he may not be a Brahmin, he may not be a sannyasi, he may be a Shudra. It doesn't matter. Varnashram is not the qualification. Qualification is Jai Krishna Tattvaveta. He has to know the science of Krishna. Whoever knows the science of Krishna, Shai Guru, he can become. चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में बताते हैं कि कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, सन्यासी है या वानप्रस्थी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो कृष्ण तत्व को जानने वाला है तो वो गुरु बन सकता है. अगर शूद्र भी है तो भी गुरु बन सकता है अगर वो कृष्ण तत्व को जानने वाला है. तो वर्णाश्रम के ये विभिन्न जो आश्रम है तो उनसे गुरु की योग्यता निश्चित नहीं होती है. Whether there are more gurus, you know, if you want to play statistics and say, oh, there's more sannyasis or there's more grihasthas, what do we care? We're only going to accept one guru anyway. और फिर ये जो स्टैटिस्टिक्स है मतलब कि सन्यासी ज़्यादा गुरु है गृहस्थ है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो एक ही गुरु की शरणागति लेनी होती है. Last question that those who took second initiation we are calling brahmanas and what is proper understanding that varnashrama can be only from brahmanas and in the same way it's obligatory to be initiated to get diksha. No, it means that not everybody should be twice initiated, or what does it mean that everybody should get a diksha? Second diksha? Yeah, I mean, no, we call diksha second initiation, but those who take second initiation, we call brahmana, but no, it's not everybody should be brahmana, but everybody should be initiated. He didn't understand it. Second initiation. Just say it in Hindi. Hindi mein boliye.
जो हम दूसरी दीक्षा लेते हैं ब्राह्मण दीक्षा, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि सब लोग को तो ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। तो सबको दूसरी दीक्षा लेने के लिए प्रोत्साहन या क्यों बताया जाता है कि आपको दूसरी ब्राह्मण दीक्षा भी लेनी चाहिए, जबकि सभी लोग ब्राह्मण Actually the Brahminical initiation, so-called Brahminical initiation, is not required. तो जो ब्राह्मणिकल जो दीक्षा है तो वो आवश्यक नहीं है। Vaishnava doesn't need a sacred thread. वैष्णव को उसकी आवश्यकता नहीं है। Vaishnava upavita नहीं चाहिए। उपवित जो संस्कार होते हैं। But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wanted to make plain that Vaishnava is better than Brahmin. तो वैष्णव को जो बीज मतलब उपवित संस्कार जो होता है ब्राह्मण दीक्षा बीज उत्पन्न होते हैं, तो कहा कि भक्ति सिद्धांत महाराज ये दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे समाज को कि वैष्णव है वो ब्राह्मण के बराबर या उससे भी श्रेष्ठ है। Therefore he gave this sacred thread. तो इसलिए उन्होंने ये उपवित संस्कार जो है तो जनोई धारण करना, तो वो संस्कार उन्होंने किया, वो दीक्षा उन्होंने दी। Including to those who were not born in Brahminical families. और उनको भी उन्होंने दिया कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए। Then the Brahmins were born Brahmins were offended. You're giving this thread to those who are not actually Brahmins. तो उस समय जो ब्राह्मण थे उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, आप जो ब्राह्मण नहीं हैं उनको भी ब्राह्मण दीक्षा या वित्त दे रहे हैं। Then no. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gave evidence that one who's chanting the holy name of Krishna, one who's engaged in devotional service to Krishna, he is better than Brahman. तो भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय प्रमाण दिए कि जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है और भगवान की सेवा में लगा, भक्ति में लगा हुआ है, वो ब्राह्मण से भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है। Aho bhakta sratachoto gudiyan yajjivagre vartate namatubhyam. They've already done everything. They've bathed in all the holy rivers. They've done all the tapasya. They're actually Arya, because the holy name of Krishna is always vibrating on their tongue. तो जैसे भागवत में बताया गया है कि जो भी भगवान का नाम जिसके जीवा के अग्रभाग पर है, तो उन्होंने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है, उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, उन्होंने तप भी सब कर लिया, वो वास्तव में आर्य है और वो ब्राह्मण के बराबर ही हो गया है। Brahmin is a small material qualification. तो ब्राह्मण जो है वो तो बहुत छोटी योग्यता है, तो एक और वो भी एक भौतिक योग्यता है। They have the super qualification. और उनके पास उससे भी बढ़कर जो वैष्णव उनके पास ब्राह्मण से भी बढ़कर योग्यता है। If someone has a PhD, you don't have to ask him, did you graduate high school? तो जिनके पास PhD की डिग्री है तो उनको पूछना नहीं चाहिए कि तुम स्कूल में गए थे कि नहीं। Is that all right? कोई और प्रश्न? This Shrutovyam, this word means that Guru who speaks according to Siddhanta. But then nowadays, if you see, like, a lot of adjustments, like this term that time, place, circumstance has been constantly used maybe by preachers or followers, that when we speak about Siddhanta, then they gradually they change or to adjust according to society. This norm is taken into consideration. Speaking about time, place, circumstance, we should act according to that this way. So how it should be understood that. तो गुरु की एक योग्यता पता है कि श्रोतीय जिन्होंने शास्त्रों के से सुना है और सिद्धांत जो समझा है और उसी प्रकार से बोलते हैं। पर एक और शब्द, तीन शब्द हम प्रयोग करते हैं, देश, काल और पात्र। तो प्रचारक है या गुरु या प्रचारक कोई भी जो भक्त है वो प्रचार करते समय कुछ परिवर्तन भी करते हैं और उसके लिए बताते हैं कि स्थल का और पात्र के लिए परिवर्तन किया गया। तो हम इन दोनों को कैसे समझें? Siddhanta doesn't change for time, place and circumstance. तो महाराज बताया है कि सिद्धांत है वो देश, काल और पात्र के अनुसार बदलता नहीं है। Mayate jam yoga prokta puratana. Krishna told Arjuna, I'm speaking to you the same old yoga that I spoke to Bhibhishan. तो भगवान कृष्ण है भगवद गीता में बताते हैं कि मैंने ये जो योग है अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पूर्व में सूर्यदेव विवस्वान को भी बताया था। Not that because you are Kshatriya and this is the battle of Kurukshetra and this is so many thousands of years later, I have a new philosophy.
तो यहाँ पर बहुत सारे योद्धा खड़े हैं, आपकी कुरुक्षेत्र का मैदान है और युद्ध होने वाला है, तो मैं तुम्हें कुछ अलग सिद्धांत बताऊंगा। Yoga Prota Puratan, same thing. तो वही पुरातन जो सिद्धांत है वही तुम्हें बता रहा हूँ। Jiva Swarupoy Krishna Nityadas, the living entity, every living entity is Krishna's servant. तो सभी जो जीव है वो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। Not that this is the 21st century, we have a new philosophy. और अभी ये 21वीं सदी है और इसीलिए कुछ सिद्धांत बदल गया। So the Siddhanta doesn't change. तो सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होता है। But some of the details of implementation may be adjusted. तो उसकी कुछ विस्तार जो है सिद्धांत का और उसको कैसे लागू करना है उसमें कुछ अलग-अलग परिवर्तन होते हैं। Just like we should chant Harinam on Tulsi Mala. जैसे हमें भगवान का नाम का जप है तुलसी माला पर जप करना चाहिए। But in New York in the beginning there was no Tulsi Mala. Prabhupada sent them to the hardware store to buy some beads. तो जब प्रभुपाद अमेरिका में शुरुआत में थे तो वहाँ पर तुलसी माला नहीं थी, तो वो कहा कि आप कोई भी माला ले आओ और उस पर जप करो। Ordinary wooden beads. और वो सामान्य लकड़ी की मतलब थे मणके। Because time, place, circumstance. तो वो है देश काल और पात्र था। And many other things और उसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं that Prabhupada adjusted according to the time, the place, the circumstance. और प्रभुपाद ने भी इस प्रकार से देश काल और पात्र के अनुसार कुछ परिवर्तन किए। But he didn't change the Siddhanta. पर उन्होंने कोई सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया। Siddhanta stays the same. सिद्धांत समान ही था। Prabhupada said old wine in a new bottle. प्रभुपाद कहते थे कि जैसे शराब है वही है पुराना पर नई बोतल में भर दिया। Oh, yes. But time, place, and circumstance is not like a, what would you say, a license that everything can be changed, everything can be changed, everything. देश काल पात्र है वो एक लाइसेंस या अनुमति नहीं है कि आप कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। But sometimes things are adjusted to push forward the Siddhanta. तो कभी-कभी ऐसे सिद्धांत को प्रचार करने के लिए ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं। Yes, last. You have a loud voice. Maharaj, at the starting of lecture, you told that the Sisupal soul enters the body of Krishna, and we also see that in the case of Aghasura and Ravana, the souls enter in the body of Krishna. The soul enter in the body of Krishna. Yeah. In the case of Sisupal, Aghasura and Ravana. So my question is that by merging in the body of Krishna, they lost their identity. No, they didn't lose their identity. प्रश्न ये था कि जैसे शिशुपाल का आत्मा है भगवान के शरीर में मिल गया और उसी प्रकार से अगासुर और रावण का भी वर्णन आता है, तो क्या उन्होंने अपना व्यक्तित्व खो दिया? महाराज उत्तर दे रहे कि नहीं, उन्होंने अपना व्यक्तित्व नहीं खोया। Srila Prabhupada explained in yesterday's Tatparya that this was only intermediate. They merged in the body of Krishna, then again resumed their original position as Jai Vijay. तो श्रील प्रभुपाद भाई के कल के तात्पर्य में बता रहे थे कि ये एक बीच का प्रक्रिया हुआ कि जिसमें वो आत्मा है उनके शरीर में मिल गया, परंतु बाद में वही आत्मा है वो भगवत धाम में अपना जो स्वरूप था उसमें स्थित हो गया। It happens in everyone's case. It happens in everyone's case that one leaves the body and enters the body of Krishna. It happens in everyone's case. It happens in everyone's case or I know English also. Sorry. तो प्रश्न ये था कि क्या कि सबके केस में होगा कि इसी प्रकार से सबका आत्मा है भगवान में मिल जाएगा? Not everyone merges into the body of Krishna. It's very rare. Therefore, Yudhishthira was astonished. How did this demon merge in the body of Krishna? तो ऐसा हर केस में नहीं होता, हर घटना में नहीं होगा, और इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज को यहाँ प्रश्न हो रहा था कि ऐसा कैसे हुआ? So it's rare that anyone merges into the form of the Lord. तो ये बहुत मतलब विशेष केस में ही होता है कि वो भगवान के शरीर में मिल गया। Klesha dikataras tesham, very difficult to do.
और ये प्रक्रिया है काफी कठिन भी है, क्लेशो दिक्कतेषां। But even after going through so much difficulty and doing it, generally they're not promoted back to Vaikuntha. That was special for Jai Vijay. तो इस प्रकार से जो भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं वो वैकुंठ में नहीं पहुंचते हैं। जय विजय के केस में ये अपवाद था। Otherwise, one goes through all the trouble, one merges, and then one falls down again. सामान्य रूप से ये होता है कि वो भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं और कुछ समय के बाद उनका पतन भी हो सकता है। Yen yen ravindaksha vimuktamanina tvayasta puja tvayasta bhava avishuddha bhute. Then parudya kristrena param padam tata. What is that? Parudya kristrena param padam tata. Tato, patantyad, what is that? Patantyadhod yusmadangreya. Yes. After going through so much trouble and merging with the body of the Lord, because their consciousness is not completely pure, again they fall down. Patantyadhod nadrata yusmadangreya. Because they've neglected the lotus feet of the Lord. तो भारत में इस श्लोक में बताया है कि जो ऐसे निराकारवादी है वो भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं और क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति नहीं है तो उसके कारण है कुछ समय के बाद उनका वापस पतन भी हो जाता है। To be impersonal is not the constitutional position of the living being. तो इस प्रकार से निर्विशेष होना या इस प्रकार से तेज में विलीन हो जाना वो जीव का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। Therefore, even from that exalted position obtained with so much trouble, patantyadhod. तो इतना कठिनाई इसके बाद भी वो उस स्थान से पतित हो जाते हैं। Shishupal and all the demons came in the category of merging into Brahma. You just asked the same. Now you're back to the first question. और बाकी जो असुर वो भी सब एक ही कक्षा मतलब सबके साथ यही हो रहा है। Now you're back to the first question. What was your first question? First question is that. What was your first question? The first question you asked me. First question. You ask. First question is that they lose their identity. Yeah, and what was the answer? They lose their identity. No, they get their sarupa. Yeah. And after that they fall down because they don't take it. No, you asked about Shishupal. So what happened to Shishupal? Yeah. Well, shall we stop here? Or We're not going till 10 o'clock, 10:30. No, we're not. We can stop here. Thank you all very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. पूज्य महाराज की जय।